Dear students, welcome to all of you on Grow Strong. Today we will explore the facts about the entitled topic Nature and Meaning of Psychology. As we know that the subject of psychology was being considered offshoot of philosophy. With the passage of time, the content of psychology has acquired a scientific nature and it is no longer based on speculation. The gradual change of this subject from philosophy to science has been responsible for the changes in its meaning and concept from time to time. Dear students, from 1879, William Wundt established first psychological laboratory at the University of Leipzig in Germany. From this date, psychology is treated scientific discipline. Dear students, we will give the detailed account about nature and meaning of psychology. Number 1. Psychology as the study of soul. As we know that in ancient times, the subject of psychology was being treated as discipline where we study the human soul. It is the subject which studies human soul. And the subject is derived from the two Greek words. Psyche means soul and logos, which means study. That is why the subject of psychology is called the study of soul. Dear students, the concept has been discarded or rejected because the concept of soul is purely metaphysical in nature, or it is philosophical in nature. We cannot study the human soul in measurable way क्योंकि सोल की फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, इसकी शेप साइज नहीं है. जो सोल है it is vague purely. वेग इन व्हाट सेंस? क्योंकि हम ऑपरेशनली सोल को मेजर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कंसेप्ट ऑफ सोल हैज बीन रिजेक्टेड. डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर द सोल द न्यू concept has emerged, that is psychology as the study of mind. यानी कि according to Greek philosophers, psychology is the study of human mind because it studies human mind. And same concept has been also rejected because mind has not having the definite shape, size and weight. जिस तरीके से सोल की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसी तरीके से माइंड की भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. जिस तरीके से सोल की फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, सेम इज द केस विद द माइंड. माइंड की भी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है. जिस तरीके से सोल की यानी कि डेफिनिट शेप टेक्सचर नहीं है, सेम इज द केस विद द माइंड. माइंड की भी डेफिनिट शेप साइज और टेक्सचर नहीं है. नाउ क्वेश्चन हियर अराइजेस, जब सोल एज ए वेग कॉन्सेप्ट रिजेक्ट किया गया तो उसके बाद माइंड भी वेग कॉन्सेप्ट है, ये क्यों इमर्ज हो गया? नाउ वी हैव टू मेक ए डिबेट ऑन इट. डियर स्टूडेंट्स, concept of the mind is broader as compared to the soul. No doubt there are the similarities between the mind and soul जो हमने already discuss की, लेकिन अब soul और mind के दरमियान डिसिमिलरिटी
क्या है, कैसे माइंड की सिग्निफिकेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सोल। डियर स्टूडेंट्स, सोल जो है it has not having physical existence and mind has also not having the physical existence, but soul जो है उसकी permanent location नहीं है according to Hindu mythology, कि उनका मानना है कि जो ह्यूमन सोल है वो इंसान के फोरहेड पे है, इसीलिए वो यहाँ पर टीका लगाते हैं। And there are other various philosophies which believes जो सोल है वो यहाँ पर नहीं है, फोरहेड पे वो नहीं है, इंसान के माथे पे वो नहीं है। जो सोल है वो इंसान के कल्ब, आई मीन टू से यू, दिल के साथ जुड़ा है, दिल में बसता है। And there are other various, I mean to say you, philosophies or schools of the thoughts which believes जो सोल है वो इंसान की किसी भी बॉडी में रहता है। यानी कि इन नटशेल वी कैन से दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोल, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और इसकी परमानेंट लोकेशन भी नहीं है। क्या सोल हमारे फोरहेड में रहता है? क्या सोल की एग्जिस्टेंस हमारे दिल के साथ जुड़ी है या किसी और ऑर्गन के साथ जुड़ी है? बट on the other hand, so far as concept of mind is concerned, according to various psychologists, they study the mind in terms of brain. As we know that brain has having the different definite shape, size and weight. brain की एक physical existence है और जो mind है it is being considered according to various psychologists the functional aspect of the brain. brain जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और ब्रेन के डिस्ट्रॉय होने के साथ माइंड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। while as on the other hand जो कंसेप्ट ऑफ सोल है वो ह्यूमन बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी इमॉर्टल रहता है, क्योंकि सोल जो है वो कभी मरता नहीं है। एज पर द वेरियस फिलोसफर्स आर कंसर्न्ड, एज पर द वेरियस schools of thoughts are concerned, and after the concept of mind, because concept of mind has also been eliminated or rejected क्यों हो गया है? क्योंकि माइंड जो है इसकी भी एट द एंड साइंटिफिक बेस नहीं है, क्योंकि हम माइंड को मेजरेबल टर्म्स में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। दैट इज वाई थर्ड डेफिनेशन or third viewpoint came into the existence, that psychology is the study of consciousness. Dear students, as we know that consciousness simply means awareness about your own self, awareness related to the surroundings, यानी कि आपका इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके रिलेटेड कंप्लीट अवेयरनेस, दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हियर द पर्सन, आई हैव क्लॉडेड द रेड जैकेट, मैंने रेड जैकेट को पहना है, इट मीन्स आई एम कॉन्शियस अबाउट द रेड जैकेट। मेरे सर के ऊपर यानी कि सीलिंग पे चॉकलेट कलर का फैन लटका हुआ है, आई एम कॉन्शियस अबाउट द फैन। डियर स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में मार्कर है, इट इज मल्टी कलर्ड, इट हैज हैविंग द रेड स्ट्रिप्स, ब्लैक स्ट्रिप्स एंड मोस्टली दिस मार्कर इज वाइट इन कलर। आई मीन टू से यू, आई एम कॉन्शियस अबाउट दिस substance. I am writing onto the whiteboard, it means I am conscious about this thing. So this is known as conscious. And psychology was being considered the subject of consciousness. And it was firstly the William James who defined
साइकोलॉजी इज बीइंग कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसके बावजूद भी दो महान और फेमस साइकोलॉजिस्ट्स, वन whom we called William Wundt and second Bradford Titchener, both the psychologists also believe that psychology is being considered the subject of consciousness। और इस consciousness को हम कैसे जान सकते हैं? There is one of the famous method, prominent method in the psychology that is known as introspection। इंट्रोस्पेक्शन के जरिए हम कॉन्शियस एक्टिविटीज को हम जान सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू लुक विद इन योर ओन सेल्फ। अपने मन में यानी कि झांकना, देखना कि अपने थॉट्स के रिलेटेड, एटीट्यूड के रिलेटेड, फीलिंग्स के रिलेटेड आप क्या सोचते हो, किसके बारे में सोचते हो। सो देयर इज ए मेथड which will help to you to look within your own self, that is known as introspection method। Dear students, the psychology as the subject of, I mean to say you, consciousness, it has also rejected। क्योंकि consciousness जो है इसकी भी कोई physical existence नहीं है। We cannot take the consciousness and put into the test tube, तो हम उसके बाद हम इसका टेस्ट कर पाते हैं। There are other prominent reasons why the concept of consciousness has been rejected। Number one, concept of consciousness has been rejected because apart from the consciousness, there are other two prominent parts of the mind। One is being called subconscious and second is being called unconsciousness। और हम कैसे कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस? क्योंकि हम दो और बड़े एस्पेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली अनकॉन्शियस अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्राइड इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर माइंड। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द ओनली स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। देन व्हाट अबाउट द सबकॉन्शियस? What about the unconscious? Number second, it is subjective, यानी कि जो conscious activities है, we study the conscious activities through one of the methods which is known as introspection। और जो introspection है इसके जो results हैं those are subjective, not objective। How those are subjective? For example, मैं आपको कहूंगा आप अपने आप को इवैल्यूएट कर लो, अपने एटीट्यूड के बारे में बताओ, अपनी थिंकिंग्स के बारे में बताओ, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओ कि जो इंफॉर्मेशन आप मेरे सामने रखते हो, आई कैन नॉट रिलाई दैट इज 100% करेक्ट। जो आप अपने बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देते हो या मैं आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, वो 100% यानी कि सही नहीं हो सकती है, वो 50% भी सही नहीं हो सकती है, उसमें बयास आ जाएगा। इट मीन्स इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिवनेस, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मैं अच्छा हूं, मेरी सोच अच्छी है, मेरे विचार अच्छे हैं। सो ऑल दीज व्यूज और द इंफॉर्मेशन विच आई हैव अटर्ड, ये सब्जेक्टिव है, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। दैट इज वाई टू से सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, it is the subject or the discipline which studies the human consciousness, it has been rejected। And third viewpoint is it is unscientific। unscientific क्यों है? क्योंकि जो conscious activities है those are subjective and not objective। In nutshell we can say that the concept of consciousness has been eliminated and rejected। Dear students, the introspection method is also not applicable on abnormal persons as well as children। यानी कि हम abnormal persons को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करवा सकते हैं,
या जो इन्फेंट से छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चा अपने अंदर झांक के नहीं देख सकता है. अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन एंड आई मीन टू से यू एबनॉर्मल पर्सन्स, एनिमल्स के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है. दैट इज़ वाई कि बहुत सा क्रिटिज्म हो गया है कि साइकोलॉजी इज बीइंग कंसिडर्ड द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस. लेटेस्ट कॉन्सेप्ट कैन that psychology as the study of behavior. Psychology does not only studies the human behavior, but it also studies the animal behavior as well. Dear students, as we know that behavior simply means any manifested life activity is called as behavior. अगर हमें behavior को समझना होगा, we have to understand the behavior in three ways. One, first, which is known as that behavior in terms of cognitive aspect. Cognitive means related to our body. For example, कि how to swimming. जब कोई स्विमिंग करता है तो वो मोटर ऑर्गन्स का किस तरीके से इस्तेमाल करता है, वो उसका बिहेवियर डिस्क्राइब कर लेता है. या डांस करना, नाचना, इट इज रिलेटेड टू मोटर बिहेवियर. या हाउ टू वॉक, आप कैसे चलते हो, इट डिनोट्स द कॉग्निटिव बिहेवियर. और अपार्ट फ्रॉम द कॉग्निटिव बिहेवियर देयर इज कॉग्निटिव बिहेवियर. Cognitive behavior means related to mind. I mean to say you are thinking. Whether you will think convergently or you will think divergently. Understanding, knowing, reasoning. I mean to say whether you will reason inductively or you will reason deductively. Your memory, memory of retention and memory of recall. These are all cognitive behaviors. And third one is affective behavior, which is related to heart. I mean to say your feelings and emotions, like you feel sad, angry, empathy, nervousness, affection. These are all positive and negative emotions. Collectively, we can say that behavior is the makeup of cognitive aspect, cognitive aspect, and affective aspect. This was all about the today's lecture. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.